हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्ज़ाम सॉल्व करने वाले हैं फॉर फिज़िक्स। लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस किए थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। आज हम उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन दिया था, अ मेटल स्फीयर हैज़ अ चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम व्हेन 5 into 10 raised to the power -13 electrons are removed from the sphere. What would be the net charge on it? सो यहाँ पर फर्स्ट चार्ज आपको गिवन है 6.5 माइक्रोकूलम माइनस में, और 5 into 10 raised to the power इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो मैंने लास्ट टाइम कराया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई आपका क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो Q की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो एन मल्टीप्लाई ई करते हैं। एन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट चार्ज हमें गिवन है दैट इज़ -6.5 माइक्रोकूलम, और सेकंड चार्ज हम कैसे निकालेंगे? बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज़ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सो फर्स्ट चार्ज दैट इज़ Q1 that is given -6.5 microcoulomb, and now second charge is equal to Na, where n is number of electron and E is the charge of an electron. Number of electrons are given, that is 5 into 10 raised to the power 13, and electron charge on electron, that is 1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb. Now after solving this, 16 multiplied by 5, that is 8, multiply 10 raised to power 13, multiply 10 raised to power -19. So this becomes 8.0 into 10 raised to power -6 coulomb, and 10 raised to power -6, that is microcoulomb. Now Q2 charge is find out by the quantization of charge. Now we have to find out the what would be the net charge on it. Net charge means the total charge, that is Q is equal to Q1 plus Q2. Now -6.5 microcoulomb plus 8.0 microcoulomb, that is equal to 1.5 microcoulomb. So that is the answer for this question. So now begin the video. Now first question is, the force per unit charge is known as, option number A electric flux, option B electric field, option C electric potential, option D electric current. Electric field is known as force per unit charge. So what is the answer? That is option number B electric field, that is force per unit charge. Electric field is equal to force per unit charge, and force is a vector quantity, so electric field is also a vector quantity. Now next question is, electric field lines provide information about field strength, direction, nature of charge, and option D all of these. Electric field lines, that is for example positive charge, provide an electric field this electric field line shows the field strength and also a nature of charge, that is positive or negative, and also define the direction in which the charge are gone.
So electric field lines provide all the properties that given here, that is field strength, direction, nature of charge, such that all of these quantities. So right answer for this question is option number D. Now next question is the unit of electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? फर्स्ट इज न्यूटन, सेकंड इज कूलम, थर्ड इज फैराड एंड फोर्थ इज डिबाई. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेबाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर represent the electric field lines due to a single negative charge? Option number A, option B, option C and option D. In option number A you can find that a simple negative charge provide electric field all around their environment, and in this option number B the many lines are towards the negative charge is in the right hand side, and in the third option, that is negative charge, all the electric field lines are towards this negative charge is in the one point, and option D is providing the negative charge many lines, many electric field lines is in the left hand side direction. But you also know that electric field line due to single negative charge is option number C, because negative charge in this electric field lines is single bounded, because single electron, single negative charge is converted into the whole electric field lines in between this negative charge. So option C is the right answer for this question. Now next question is the magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to weight is given by. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड weight is equal to mass into gravity. In this question given are that electric field intensity and weight is equal. So electric field that is equal to force per unit charge and weight is equal to mass into gravity. Given that electric field is equal to weight, so F by Q is equal to mg. Now it is given that electrical force is equal to its weight. So E is equal to force divided by charge, that is force is equal to weight, that is mg, and Q charge is in the electron. So this becomes mg divided by E. So right answer for this question is option number B. Now SI unit of permittivity of free space is option number A Farad, option B Weber, option C is Coulomb square Newton inverse meter inverse square, option D Coulomb square Newton inverse meter inverse square. Permittivity of free space, that is epsilon naught. Epsilon naught, we know that force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. Epsilon naught is equal to 1 upon 4 pi f q1 q2 divided by r square. 4 pi is constant, so force q1 q2 divided by r square. Now charge is measured in coulomb, that is coulomb square, divided by force is measured in Newton, and
distance is measured in meter. So this unit becomes Coulomb square Newton inverse meter minus 2. So right answer for this question is option number D. Now next question is dimension formula of electric field. Electric field is known as force per unit charge. Force and charge dimension formulas are also given on my YouTube channel videos. You can watch it from there. And electric field intensity की जो डायमेंशंस होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज फॉर MLT -2 divided by AT. This becomes M1L1T -3 A -1. So right answer for this question is option number A. Now next question is the electric field intensity at the surface of a charged conductor. किसी चार्ज कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कैसे फॉल करती है. ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी डायरेक्टली नॉर्मल टू द सरफेस, ऑप्शन सी डायरेक्टली टेंजेंशियली टू द सरफेस, ऑप्शन डी डायरेक्टली अलोंग 45 डिग्री ऑफ द सरफेस. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर. So option B is the right answer for this question. Now next question is the electric dipole is kept in a uniform electric field. अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है. फर्स्ट अ फोर्स एंड अ टॉर्क, एक फोर्स या फिर एक टॉर्क. अ फोर्स बट नो टॉर्क, अ टॉर्क बट नो फोर्स. डी नेदर अ फोर्स नॉर अ टॉर्क. फोर्स क्या होती है आपके पास, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है, मीन्स उसके बीच में डिस्टेंस होता है. तो यहाँ पर ये जो क्या है टॉर्क के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका डिपेंड करता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now next question is which one is the expression for electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन राइट होगा. ऑप्शन ए P इज इक्वल टू 2AQ, P इज इक्वल टू 2A/Q, P इज इक्वल टू Q/2A, Q इज इक्वल टू 2AP. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर हम क्या करें दो चार्जेस लेते हैं -Q एंड +Q and the distance between these two charges are 2A, so P is along the direction -Q to +Q is equal to product of first either any charge, any magnitude of charge and multiply by distance between them. So right answer for this question is option number A, that is P is equal to 2AQ. Now this is for you question. डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन परमिटिविटी फ्री स्पेस आप मुझे बताओगे. थैंक यू वेरी मच.